Hello, good morning, all. Just give me a second. We'll get started. Good morning, Mr. Goyal. Just allow us a minute and we'll get started right away. Thank you. Okay, I think, Paras, can you confirm if my screen is visible? You can hear me okay? I can hear you okay. I can see you, but I can't see the screen. Are you sharing something right now? No, I'm not sharing Got it. anything right Okay. now, but yes. A very good morning, all. Welcome back to the Career Compass. My name is Tipit, and we are back again with yet another very, very exciting speaker. Today's session is very exciting. It's about leadership, and I truly believe that some of India's most promising leaders are amongst us here today, and we are very excited for your future. And to help you get started on that journey, we have Paras Goyal joining us from Tata. In today's rapidly evolving workplace, ambition alone is no longer enough. Professionals are discovering that true career momentum comes when ambition is aligned with a very clear sense of purpose. And when you want to achieve that, uh, you have to understand that what exactly is the mindset that's required on that journey. On this journey from ambition to alignment is at the heart of what Mr. Goyal does on a day-to-day basis at Tata. He currently leads leadership development at Tata Steel. He has over 20 years of rich experience, right from consulting majors like BCG and McKinsey. He has coached about 100 plus teams and 500 professionals across some 12 countries. He's helped individuals unlock clarity, build influence, and most importantly, lead with intention. Um, he specializes in guiding people through career transitions, identity shifts, and the pursuit of meaningful impact. He's a PCC certified coach, a highly sought after speaker. So, again, we are very, very lucky to have him with us this morning. He has addressed some of the top institutions in the countries, your IIMs, your XLRIs, your MICAs, and his approach consistently enables emerging leaders to discover the purpose in shaping fulfilling high impact careers. Mr. Goyal, thank you so much, and a very, very warm welcome to you on behalf of Shoolini University. Um, so, we have our entire cohort here. A lot of people are coming in and out. So, with that, I pass it over to you, and I'm on standby. Thank you. Thank you so much, David. Thank you so much for this kind introduction and kind words. I'm so delighted to be part of this webinar today. And David was sharing how this program is shaping up and how we have some amazing set of leaders who will be potentially joining for this session today. So I have few slides, David. I need your help as we maneuver through it. Sure. So Yeah, I'll get it screen shared. And while I do that, I just wanted to sort of share. So most of our students are coming from various parts of the country. So if we could thoda Hindi, thoda English, so that everyone is aligned with what you have to share with us today, I think that would be great. And we can keep it very, very conversational. So I'll leave that with you as well. absolutely, that's the idea. And yeah, I will keep this in mind, David. So till the time PPT is coming up, I hope everyone, I can't see everyone on the webinar as the format allows, but I request everyone to use chat function and we try to see how much engaging we can make it happen. So for the next 1 hour or so, my intention is to first I will share a bit about me, my own journey. Then I will talk about some of the lessons that I have experienced in my career so far. And around in the end, I will uh, allow a lot of questions actually to come from students. तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं, so please you know put that in the chat और depending on the time जितना भी हम उसको कवर कर पाएंगे we'll cover that. Okay? Okay. So So I have enabled the chat, guys, and I think the screen share should also be starting right about now. So, excellent, excellent. okay. As we begin, so let me ask you students, आपने बड़े सारे webinars और classroom session attend किए होंगे, right? What would be the best way to begin a session?
कोई आइडिया है आपके पास? सेशन स्टार्ट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ओके, इंट्रोडक्शन। ओके, व्हाट एल्स? यस यस, पुट इन द चैट प्लीज। आपने बड़े सारे सेशंस वेबिनार देखे होंगे, क्लासरूम भी देखी होगी। सो आपने बेस्ट तरीका क्या देखा है एक सेशन को स्टार्ट होते हुए या करने का? ओके, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। ओके ओके, गेट टू नो ईच अदर। यस, दैट्स अ गुड आइडिया। बट गिवन कि हमारे पास इस वेबिनार में 100 से ज़्यादा लोग हैं, तो इंट्रोडक्शन करेंगे तो हमारे को 2 घंटे उसमें लग जाएंगे। ओके तो जब भी मैं बड़े सेमिनार्स में जाता हूँ, सो हम इसको अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, रिपीट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो विल स्टार्ट बाय डूइंग 3 थिंग्स। ओके, ये सबको इकट्ठे करनी है। We'll start by taking a deep breath. So let's inhale everyone and exhale. Just be present and put your biggest smile. Okay, just yes, smile, smile. Broad gauge your smile. Smile, yes, it should be smiling. Your heart should be smiling as well. Wonderful. तीसरा हम करेंगे your DDLJ pose. What is DDLJ pose? Anyone? DDLJ pose क्या होती है? So there's a very famous movie DDLJ, right? Don't ask me, you haven't seen it, right? So what is the DDLJ pose? Yes, famous iconic pose of Shah Rukh Khan. So अब जहाँ पे भी आप हैं अपनी जगह पे, so let's start with a big smile, big depth and DDLJ pose. Yes, yes, yes. Put your hands out and let your smile be on your face. Okay, सबने कर लिया? Very good, very good, very good. So that's the best way to start in a group which has a lot of leaders. And I thought of doing it in a way so that it is less time consuming और सबके सबके पास एक प्रेजेंट मोमेंट में स्माइल करने का मौका मिले। ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव अहेड दिपित, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ ऑफ ए चाइल्ड। सो उसकी फोटो आप देख रहे हैं। सो ये बच्चा एक स्मॉल होम टाउन करनाल, करनाल एक शहर है जो एक छोटा शहर है हरियाणा में, वहाँ पे पढ़ता था। और फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ वो बड़ा क्यूरियस था अबाउट हाउ थिंग्स हैपन, हाउ कंपनीज वर रन, एंड ही हैज एम्बिशन, ही वांट्स टू डू समथिंग इन हिज लाइफ। वो क्या करना था, कैसे करना था, वो उसको नहीं पता था, राइट? बट ही हैज अ कंपैशन इन हिज हार्ट। ओके, सो अब इस बच्चे की स्टोरी आप देखें। ही स्टडीज इन हिंदी मीडियम स्कूल एज वेल। सो वहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल में ही हैज स्टडीज इन हिंदी, लाइक अभी भी इसको याद है जब वो टेबल्स याद करते थे तो ऐसे करते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दिस बिफोर, but that's the way we used to remember tables in Hindi because he studied in Hindi medium. Fast forward around 30 years from moving from the Karnal city. Yes, I know a lot of you are saying they also used done it. Okay. Yes, yes, yes. Absolutely, absolutely. Good, good. Fast forward, a lot of things have shaped his life. And next slide, Dibit, please. Today you are meeting this child in front of you, and लास्ट 3 साल 30 साल की जर्नी काफ़ी काफ़ी एक्साइटिंग रही है। बहुत कुछ सीखने को मिला है। बट वो जो 3 क्वालिटी थी जो उस बच्चे में, वो आज भी उसके पास है, राइट? So Dipit, I'm getting some messages that people can't see PPT. Can everyone see PPT screen or not yet? Yes, yes. Okay. Okay, most of you can see it. Okay, thanks for confirming. So yeah, वो 30 साल की जर्नी है। लास्ट 30 साल की जर्नी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो अब ये इंसान जो आप देख रहे हैं, मेरा नाम पारस है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे दीपित प्लीज। इस 30 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे दीपित ने बताया, अभी मैं टाटा स्टील में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं BCG, मैकेंजी, इवैल्यूसर्व
कंपनी में काम कर चुका हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो दो भागों में रहा है। पहला भाग बेसिकली इन द कंसल्टिंग वर्ल्ड। कंसल्टिंग मतलब कंपनी को सलाह देना कि आपको ये काम कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग फंक्शन हो सकता है, एचआर फंक्शन हो सकता है, और एनीथिंग। लेकिन लास्ट के 10 साल जो मेरा करियर रहा है वो पीपल डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, हाउ टू हेल्प आर टैलेंट इन कंपनीज टू ग्रो, राइट। उसके ऊपर मेरा काफ़ी फोकस रहा है। और ये शिफ्ट मेरा कब आया, जब लगभग 10 साल पहले मुझे एक मेंटर मिला और मैंने अपना रियल स्ट्रेंथ जाना कि मैं किस में अच्छा हूँ, व्हाट आर माई क्वालिटीज विच इज़ रियली रियली रिमार्केबल, और किस टाइप के प्रोफेशन में मैं सक्सीड कर सकता हूँ, राइट। सो लगभग 10 साल पहले जो मेरा मेंटर थे, उनसे बात करते हुए उनसे मैंने लगभग 6 महीने मेंटरिंग ली। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जो जॉब कर रहा था, मैं अच्छा कर रहा था, लेकिन अगर मुझे अपना करियर और अच्छा बनाना है या करना है या एंजॉय करना है, उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मैं पूरे शिद्दत से करना चाहता हूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ है, राइट। सो उस दिन के बाद से आई स्टार्टेड टू टेक स्मॉल एक्शन टू मूव इनटू द करियर विच ट्रूली ट्रूली अलाइंस विद मी। तो मैंने अपना करियर लर्निंग एंड डेवलपमेंट फील्ड में स्टार्ट किया, और धीरे 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 करते करते उसको बहुत सारी एजुकेशन मैंने करी है, उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस मैंने किया। और ओवर द लास्ट 10 years नाउ आई हैव वर्कड ए लॉट इन पीपल डेवलपमेंट स्पेस। और अब ये मेरी एक्सपर्टीज बन गई है, ये मेरे की स्ट्रेंथ बन गई है, जो मैं अभी करंट कंपनी में भी उसमें कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज दीपित। But yeah, beyond a professional person, I always believe you meet someone, right, who is also human, right? So इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आई एम बेस्ड आउट ऑफ जमशेद। इससे पहले मैं गुड़गांव में 20 साल रहा हूँ, और मेरी फैमिली अभी गुड़गांव में ही है 20 साल से। सो आई हैव वन सन, वन डॉटर। एंड जो मुझे शौक है, आई रियली लव नेचर वॉक्स। म्यूजिक इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टेड। और मैंने थोड़ा फ्लूट बजाना भी सीखा है अभी रिसेंटली। और जो रियल स्टोरीज मूवीज होती है, जो सच्चाई पे बनी होती है, कोई इंस्टेंसेस पे बनी होती है, वो मुझे देखना पसंद है। और मैंने हमेशा से ही देखा है, जब जब मुझे मुझे क्या चीज़ ड्राइव करती है, एंड आई कीप आस्किंग व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, राइट। तो जब तक मुझे व्हाई क्लियर नहीं होता, सो I don't enjoy, doing my work. So I keep pushing myself, I keep pushing my teams, I keep pushing my organization to keep checking why we are doing what we are doing, right? So that's a bit about me beyond my LinkedIn profile, maybe. होगन असेसमेंट एक पर्सनालिटी असेसमेंट टूल होता है, जिसमें हम लीडर्स जो होते हैं उनके स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि कौन से बिहेवियर उनको अपना काम करने में सहायता कर रहे हैं, काम काम के संबंध में, और कौन से आपके बिहेवियर्स हैं जो आपको अपना काम करने में हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं। तो हमारे बड़े सारी टेंडेंसीज होती है जो हम वर्क प्लेस और काम करते हुए यूज़ करते हैं। तो होगन असेसमेंट उस चीज़ को क्लैरिफाई करता है। इसी तरह से MBTI असेसमेंट होता है, जो हमारी प्रेफरेंसेस के बारे में बताता है, और जो चीज़ हमें शायद मालूम नहीं होती उसको उजागर करने की कोशिश करता है। तो ये सब जो टूल्स होते हैं, इनको यूज़ करके हम लीडर्स को सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं, और उसके बाद वो उनको टीम बिल्डिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और अलग अलग एरियाज में उनको हेल्प करता है। सो दैट इज a bit about the work which I do. Next slide, please. So I was thinking what I should be sharing with you, right? And I was just reflecting on what I have done and what are the key lessons I have learned. So ये लेसन मैं अपनी लाइफ के तजुर्बे से बता रहा हूँ, so that I don't know if you relate with it or not, but I just sort of sharing it with you because this is something which I've seen
practically experience first hand, and that's why I thought of sharing with you. So इसमें पहला लेसन है बी लिटरेट। लिटरेट पहले 20 साल पहले उस लोग को कहते थे जो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता, लेकिन आज की दुनिया में हम इलिटरेट उसको कहते हैं हु इज नॉट विलिंग टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, राइट। सो आज बहुत ज़रूरी है, जिस स्पीड से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, हमें अपने आप को एक लर्निंग, सीखने के जज्बे से भरना पड़ता है, राइट। और ऐसा नहीं है कि जो आपने सीखा वो 1 साल के बाद भी काम आएगा, राइट। तो आपको हर हर वक्त, हर हर क्षण, हर परिस्थिति में अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। सो एक सीखने का जज्बा जो है लीडर्स को ग्रो करने में बहुत बहुत फायदा करता है। सेकंड इज एंकर योर पर्पस। तो जैसे मैंने बताया, जैसे हम स्टूडेंट्स होते हैं, जब मैं भी अपने एमबीए कर रहा था एमआईटी से, तो हमारा सबसे एक ही उद्देश्य होता था कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाली नौकरी मिल जाए, राइट। लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन, आई फाउंड दैट समथिंग इज मिसिंग। एंड वो समथिंग जब तक मुझे नहीं मिला, मैं जॉब को पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहा था। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डे वन से पर्पस आपको डिस्कवर करना है, बट जैसे जैसे आपको मौका मिले, अलाइन योर स्ट्रेंथ विद द पर्पस विच ट्रूली एक्साइट्स यू, राइट। मैं विश्वास रखता हूँ कि किसी ना किसी शेप में सिग्नल्स आते हैं हमारे पास, जो हमें बताते हैं कि हम किस कार्य करने में अच्छे हैं और क्या हमारा पर्पस हो सकता है। तो इन सिग्नल को सुनते सुनते आपको इनपुट्स मिलते रहते हैं, एंड यू फाइंड एंड एंकर योर वर्क विद योर पर्पस। ओके। थर्ड, फॉलो ए नैनो स्टेप अप्रोच। नैनो स्टेप क्या होता है? नैनो स्टेप मतलब बिल्कुल छोटा सा स्टेप, राइट। मैंने देखा है कि आपके बड़े से बड़े ड्रीम भी पूरे हो सकते हैं, राइट। मुझे याद है जब मैं पहली बार 5 स्टार होटल में गया, मैं लगभग 15 साल का था, और मैं अपने ताऊ जी के साथ पहली बार 5 स्टार होटल में गया था। दिल्ली में हयात रेजेंसी नाम से एक होटल है। तो वहाँ पे मैं गया, और ताऊ जी थे और मेरे पापा मम्मी थे। और उस टाइम अराउंड 25 साल पहले वहाँ पे चाय जो थी 25 रुपए की मिलती थी। उस साल पहले बहुत बड़ी बात है 25 रुपए की चाय, बिकॉज उस टाइम जनरली चाय 1 रुपए की मिलती थी। तो मेरे मन में बस ये एक ड्रीम आया कि यार, मैंने जल्दी से जल्दी अपनी फर्स्ट जॉब लेके अपने पूरी फैमिली को इसी 5 स्टार होटल में डिनर कराना है। तो वो दिन के बाद वो मुझे थोड़ा सा गोल इंस्पायर करता रहा कि अच्छा करना है, लेट्स डू माय बेस्ट, लेट्स डू व्हाट आई कैन डू। और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आना, उसके बाद इंग्लिश में बात करना, इंटरव्यू देना, तो बहुत बहुत चीज़ें सीखने को थी मेरे पास। बट वो मैं नैनो स्टेप करता रहा, और thankfully things really worked out, and I was able to take my family from my first salary to the same hotel for the dinner. So I think Bhushan, जब भी मैं याद करता हूँ, I think I always feel happy about it. So that's about the power of taking small steps every day to realize your dreams. And next is, गिवन कि जो स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है बहुत स्पीड से हमें हेल्प भी करती है, और इसका कोई स्केप नहीं है, मतलब हमें टेक्नोलॉजी के साथ ही सीखना पड़ेगा। तो इसलिए आप ऑनलाइन, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग आप ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं यहाँ पे। तो वेन एवर यू लॉग इन टू सिस्टम, राइट, आप सिस्टम में करते हैं, आपने कोई लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू ये वेबिनार भी आपने डायल इन किया है। सो वेन एवर यू आर लॉगिंग इन, say to yourself, I'm logging into curiosity and not the system, right? बिकॉज कभी कभी लगता है यार, ये क्या से हमें हेल्प करेगा, कैसे नहीं करेगा। तो हमेशा अपनी जो क्यूरोसिटी वाला एंगल है उसको आप लाइव रखें, और स्पेशली इन द टेक्नोलॉजी फील्ड, सो दैट यू आपका जो जज्बा है सीखने का, वो एकदम ताज़ा रहे। एंड लास्ट पॉइंट विच हैज़ रियली वर्कड फॉर मी इज हैविंग ए सेट ऑफ मेंटर्स एंड गाइड इन योर लाइफ, राइट। मैं मानता हूं कि मेरी जो ग्रोथ हुई है उसमें बहुत सारे मेंटर्स और कोचेस ने मुझे सही समय पर गाइड किया। और आपको भी अगर वो इकोसिस्टम मिल जाए, ठीक है,
और आप उसमें थोड़ा एफर्ट करें। ऐसा नहीं कि मेंटर आपके पास आएगा चल के, हाँ जी पारस आपको मैं कैसे मेंटर कर सकता हूँ। तो कभी कभी हमें खुद रीच आउट करना पड़ता है, सर आई नीड दिस हेल्प, क्या मेरे मेंटर बन सकते हो। तो आप उन मेंटर्स और गाइड्स को अपनी लाइफ में रखिए। मेंटर्स ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल मेंटर ही हो, राइट। ये आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं in building some skills, right? So don't get confused mentor by only professional mentors, but कोई भी mentor, guide, friend who can support you. So create that power of your ecosystem, people around you who are actually supporting you to be your best version of yourself, right? So अगर आपके पास ऑलरेडी है ये इकोसिस्टम, वेरी गुड। अगर नहीं है तो आई सजेस्ट किसी ना किसी शेप और साइज में आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, राइट। सो मैं जनरली विश्वास रखता हूँ कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। सो these are few slides which I prepared so that at least you get to know a bit about me, my story, and some of the key learning which I had from my life. So that's all in terms of me speaking. As I mentioned, I really want to take next 25 minutes in hearing from you, listening to your questions, and supporting you on those lines. So thank you so much for listening to me. And Dipit, maybe it's time for Q&A, and for that I need your help, please. Of course, of course. And thank you so much, for sharing that very, very inspiring journey. And I think the growth that you've had as a professional, as an individual, I think it's truly remarkable, and I'm sure very, very inspiring for our students as well. So I was away from the screen, so I'm just catching up with the chats and Sure. everything. So let's start with some questions. So guys, okay, so as soon as I said it, so I think Raji is asking, what is the best thought of your life? Best thought of my life. Okay. Best thought. Yeah, I think there's one thing which I really believe and keep saying to myself. If you meet 10 people, अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं, 9 में से 10 किसी ना किसी चीज़ की कंप्लेंट कर रहे होते हैं। Hmm. ये नहीं हो रहा है, कॉलेज में ये नहीं होता है, प्रोफेसर अच्छा नहीं है, इंडिया में ये नहीं होता है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, इन सम शेप एंड साइज वो किसी ना किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं जो आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है और आप करना चाहते हैं। लेकिन थैंकफुली आई थिंक वन थिंग विच आई कीप सेइंग टू, व्हाट इज इन माय कंट्रोल, विच आई कैन डू टू लिव माय life in the way I want to live. Let me repeat. What is in my control, which I can do to live the life which I would love to live? Right? सो आपको अपने आप से पूछना है, प्रॉब्लम बहुत है, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपके कंट्रोल में क्या चीज है, छोटी सी चीज जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ को जैसा जीना चाहते हैं उसके लिए। बिलीव मी, 100 में से एटलीस्ट आपको एक चीज हमेशा मिल सकती है, हमेशा मिल सकती है, राइट। रिमाइंड्स मी, मैं बीटेक कर रहा था, मैंने बीटेक रादौर से की है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। सो वहाँ पे हम चिल्लाते रहते थे, आप कंपनी लेके आते हैं जॉब के लिए, आप कुछ नहीं करते हमारे लिए, स्टूडेंट्स मिलके हल्ला करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक गेस्ट लेक्चर को बुलाया। गेस्ट लेक्चर ने सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन था, आप में से कितने लोग जो यहाँ बैठे हैं चाहते हैं आपकी जॉब लगे। Hmm. सब ने हाथ खड़ा कर दिया, सब ने। सेकंड क्वेश्चन पूछा, आप में से कितने लोग हैं जो ये यकीन से कह सकते हैं कि कल अगर टीसीएस कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ जाए तो आप उसका इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। 300 में से सिर्फ 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया। एंड दैट वाज ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट फॉर मी। यू नो एक बिग साइलेंस था उसके बाद रूम में। मतलब इट्स लाइक शोइंग द मिरर टू यू कि आप इतना कह रहे हो, आप रेडी तो हो नहीं उसके लिए, लेकिन आपको चाहिए वो, राइट।
सो आई थिंक उसके बाद से मेरे को बात इतनी हिट करी कि यार फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यू शुड बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट, व्हाट यू वांट। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हो और आप जॉब 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 कर रहे हो, so there's no point in doing that. So yeah, I just want to share a bit on that one. Actually, I have a question for you. Throughout your career, you have worked in some very, very interesting organizations. You've spent a lot of time in consulting. So, through your years of consulting and consulting, at least the public opinion is that you have to be exceptionally smart, a creative problem solver to make it, especially in companies like PCG, companies like McKinsey. So, and I'm sure you've met some truly incredible people. So, if you could share some transformative stories or something from those years as well, that how you've seen consultants grow, how you've seen consultants operate, and what is that mindset, I think that would be really good. Absolutely. I think I have seen consulting, I have felt consulting. I mean, I won't say it's a part of my DNA, but yeah, I can almost say that. आई थिंक कंसल्टिंग फील्ड में जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा, अ, एक तो होता है स्किल सेट, यू नो, हाउ आई कैन स्ट्रक्चर द प्रॉब्लम, हाउ आई कैन आइडेंटिफाई द राइट प्रॉब्लम, एंड हाउ आई कैन पोटेंशियली सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दैट इज अ स्किल पार्ट, राइट? कि आप प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे क्या मेथड्स हैं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट दैट इज द माइंड सेट, माइंड Hmm. सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? एंड जो कंसल्टिंग करियर होता है, इट्स अ मिक्स, एंड सक्सेसफुल कंसल्टेंट आर हु हैव द माइंड सेट एंड स्किल सेट बोथ टू रियली सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? और ऐसा नहीं कि आपको कोई जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं आप, हम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, यू नो, ऑफ कोर्स वी सॉ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर टू क्लाइंट प्रॉब्लम्स एज वेल, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट simple word, for example, so what, so what, right? आप कोई भी एनालिसिस करते हैं तो हम पूछते हैं सो व्हाट, सो व्हाट शुड आई डू विद इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? फॉर एग्जांपल, in India there is an opportunity to have online degree, you know, program which is not as effective as yet, right? So the question is, so what should we do with this information? So information के आप पूछते रहेंगे so what, so what, so what, so what, unless it really becomes a true distinguished insight. That's what consultant do. और स्पेशली आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, गूगल्स हैं, जेन एआई है, बट द आइडिया इज टू रियली sharpen the so what to such an extent that the insight which comes is truly remarkable. और उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रोसेसेस भी होते हैं, but that is something which is truly remarkable in some of the consulting company which I have seen. Excellent. Another question for that, basis on personalities and individuals. So you are someone who is very academically inclined from the looks of it. You've done various certifications as well. So what inspires you on your journey, जो आपकी एक journey है, to become a lifelong learner? Or so that is something that Shoolini, learning should never stop. It's all about continuous learning. Right. So what inspires you to keep learning more, to keep becoming better? So if you could share that as well. So I want to share two things on that. Uh, See, as a human being, we are, it is our nature, second nature, to continuously learn. And why do I say that? Every one of you, जो भी Hmm. इस वेबिनार में है, right, Dipit, they have learned how to stand and walk on the ground when they were 12 months old. Believe me, कम से कम एक बच्चा 90 से 100 टाइम गिरता है चलना सीखने के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आज के दिन में अगर आपको मैं बोलूं दीपित या किसी को भी कि आपको कोई बात नहीं, अगर 90 बार भी फेल होते हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, यू हैव टू कीप लर्निंग। इट्स Hmm. वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, but our DNA, our existence is basis on that. We are born as continuous learner. It's a part of who we are.
तो वो एग्जाम्पल मुझे बड़ा इंस्पायर करता है, और हर हर एक ने ये सीखा है, हम भूल गए हैं। एंड सेकेंड, आई ट्रूली बिलीव, जब हम करियर की बात करते हैं, योर करियर इज ए लर्निंग जर्नी, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट। द फास्टर यू लर्न, द फास्टर योर करियर इज गोइंग टू मूव। अभी आप मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं कैसे अपने आप को मैं नॉलेजेबल करूं और एक्सप्रेस कर पाऊं अपनी फर्स्ट जॉब के लिए, या अपने फर्स्ट, अगर आप एंटरप्रेन्योर है, अपने फर्स्ट बिजनेस के लिए, तो आप स्किल सेट सीख रहे हैं, रिस्क कैसे ले सकते हैं, कैसे बात करनी है। दिस इज ए लर्निंग जर्नी। जब आप फर्स्ट स्टेप पे हो जाएंगे, देन यू स्टार्ट मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट लर्निंग जर्नी, मतलब 10 साल की नेक्स्ट जर्नी। सो हम्म, लर्निंग जर्नी इज ऑलवेज देयर, बट हम उसको कई बार अवेयरनेस में नहीं ला पाते, या वी आर नॉट अवेयर एक्चुअली दिस इज हैपनिंग ऑल द टाइम। And you take any leader in the world, let me guarantee, they are continuously learning. It's a learning journey which is allowing them to be moving ahead, next learning journey, right? So it's a part of who we are. It is already happening as we are speaking. The idea is to make sure we strategically, consciously make it happen for ourselves. mhm. Excellent. I really like that. There's one interesting question that I want to pick up on. What does success mean? Is it success when your dreams come true or when you make a lot of money? Yeah, so I think the benchmark of success keeps changing, Divya. And Yeah. yeah, as in my story, when Hmm. I was doing my BTech and I went to this five-star hotel, I was telling, Hmm. I have this number that I have to earn 1 lakh rupees per month as soon as possible. Hmm. So that was my goal. I was striving towards that goal, right? And once I achieve it, right, that was a success for me. But that is just a milestone. ऐसा नहीं कि वो जर्नी पूरी हो ना, I have created more goals for myself, right? सो इनिशियली टू बी ऑनेस्ट, आई नो मुझे 20 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन सक्सेस के दो मायने हैं। ऑफ कोर्स, जो भी Hmm. आपकी मेटलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, which is fine. I'm not saying this is not right. Have those goals, move towards that, right? But what Hmm. I really felt when once you achieve that mark, the definition of success changes for you, right? And that's why I said the purpose becomes more important than success at that time. किसी की लाइफ में वो 10 साल के बाद आता है, किसी में 20 साल के बाद भी आ सकता है, बट बिलीव मी, द मोर एंड मोर लीडर आई हैव वर्कड विद, they always believe the real success lies once when you are doing something which is aligned with your purpose, right? So yeah, but yeah, I'm not saying uh, for the students maybe in this age, have your focus goal. It could be salary, job, whatever. But yeah, the success definition will keep evolving. So be having big ears and listen to those signals as we move forward. Excellent. There's a very interesting question that I want to pick up on as well. Sure. Someone's asking, सर आपने लाइफ में ऐसी क्या गलती की है जो हमें नहीं करनी चाहिए? uh, so I think लाइफ में गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती है, राइट? एक गलती जो मुझे लगता है कि जो मैंने सबसे ज्यादा सीखा, द वे आई पुट इट, द लर्निंग विच has given me lot of learning. So I was in MBA, my final year, तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए वोडाफोन इंडिया से, लाइक 20-21 साल पहले वोडाफोन इंडिया वाज अ बिग बिग कंपनी। सो आई वाज गुड इन स्टडीज, और सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया, और हम इंटरव्यू देने गए मुंबई में हेड ऑफिस में। आई वॉज थिंकिंग इन द इनसाइड कि आई एम द ब्राइटेस्ट वन, मुझे सब कुछ पता है, आई विल क्रैक द इंटरव्यू। एंड it didn't go well. It was very, very bad for me. And I really, really felt hurt, dejected. ऐसे कैसे? I think the biggest learning which I had that day is that you need to keep sharpening your skills, sharpening your saw, as you call it, right? As we call in the, like एक प्लेयर होता है, जैसे क्रिकेट में प्लेयर होता है, राइट? He prepares for making a century, right? But he can still get out on a duck.
बट वो प्रिपरेशनल लेवल जो है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है. आई थिंक दैट्स समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस. एंड आई ऑलवेज encourage students, everyone, to there's a word called excellence. Okay, I don't know इसको हिंदी में exactly क्या बोलेंगे, but excellence is a very very great quality, right? So whatever you're doing, use that excellence, try to do your best, right? For example, मुझे बहुत सारे वेबिनार में जाने का मौका मिलता है, स्टूडेंट्स मिलने मिलते हैं. अब मैंने ये स्लाइड्स बनाई थी पित, राइट? अगर मैं चाहता था बिना स्लाइड के भी बात कर सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि मैं बेस्ट करूँ, स्टूडेंट्स जो है उनको बेस्ट मिले. आई शुड बी मेकिंग श्योर कि जो भी इंटेंशन है इस सेशन का वो बेस्ट आउटकम हो. तो उसको सोचते हुए मुझे जो बेस्ट कर सकता हूँ उसको ट्राई करता हूँ. तो एक्सीलेंस इज अ वर्ड, एंड आई सजेस्ट एवरी वन टू नॉट हैव दिस टेकन फॉर ग्रांटेड ओवर कॉन्फिडेंस. नहीं करेंगे तो भी चलेगा. सो दैट इज द गलती विच आई सजेस्ट यू शुड नॉट डू. Right. Thank you so much for that. There's one which I think this usually comes up. I'll rephrase it. So let's say students have two job offers. One is offering career growth, and one is offering good money. Mm. So how would you sort of evaluate that decision, and what would your decision also be if you were Yeah, playing a yeah. role coming out of business school? So this is a common question which I also support as a coach to a lot of leaders. Dipit, Hmm. जो 20 साल के करियर में भी है वो भी ये क्वेश्चन उनके पास भी ऑफर्स आते हैं. सो इसमें सिंपल सी बात है. Hmm. ऑलवेज थिंक ऑफ योर करियर in a long term, right? So if, for example, if someone wants to be CEO, Yeah. he should think about whether this job is allowing me to be the CEO, maybe whatever he's thinking about 10 years from now. Hmm. If you want to best in the product management space, Hmm. whether this can be a step up for me to be the best in that case. If I want to the best, I don't know, like uh, whatever pilot in the world, right? Hmm. So whether this education, this certificate will help me into that space or not. Hmm. So I think just keep focusing on the long term, whether it is making sense for long term alignment or not. And believe me, I think you might all of you have seen this movie Three Idiots. Focus on what you're good at and do it in the shiddat way, and everything will follow. So that is actually true. So Hmm. that's a short answer. And of course, there are other practical way these days. There's some assessment tool as well for leaders, which helps them to get more clarity. But Hmm. in generic way, that's what I can say. Excellent. Um, Actually, there's one question that I also would want to know, and I think I would love to hear your opinion on this. So, there's someone who asked कि private job में security इतनी नहीं होती. Hmm. So, how do you manage that? So I don't know. I mean, in what is truly important for you, if you really think government type of job will really excite you, then of course there are ways through which you can get into government job as well. But let me tell you, I've met with a lot of people, I'm not saying good or bad, but it depends on your ambition level, what truly excites you, whether you want a soft, comfortable job. That Hmm. is also something, or you really want where you want to grow faster, learn faster. So it very much depends on ambition of individual, Dipit, right? Hmm. But yes, you're right. In private job compared to government job, of course, the job security is not there. But having said that, ऐसा नहीं है. Uh, Security नहीं होती in a way, it will keep you on the edge. Hmm. अच्छा, I have to be my best. Okay, I have to learn best. So वो आपको edge पे रखती है in a way. You learn the latest technology, you learn the latest Yeah. things, Hmm. and that will help you prepare for the next career growth. So I have moved to 5 companies, and believe me, in some shape and size, if I can go in my अच्छा सब ठीक चल रहा है, तो I may not be pushing myself, ना. Hmm. So in a way, think this as a positive opportunity to keep enhancing your skill set. So Hmm. that's the way I will put it. And of course, if you're interested in government job, apply for it, aim for it, prepare for it, and of course, people also get those jobs as well. Great. And I also think that um, आई थिंक दिस इज समथिंग कि हमें काफी कंडीशन हो गया है सुनने के लिए कि गवर्नमेंट जॉब सेफ है, सिक्योर है, कंफर्टेबल है. बट आई थिंक दैट हैज ऑल्सो ड्रास्टिकली बिन चेंजिंग इन द Yes. लास्ट
couple of years because पहले एक perception थी कि चलो ठीक है सरकारी नौकरी मिल गई हमें कुछ नहीं करना and that's it. But I think सरकारी नौकरियों में भी as and when technology becomes more integrated, accountability also increases. Right. Uh, Governments are also becoming very corporate in the way they do things Yes. using. Yes. So मतलब वो I think and I want to share this with everyone. अब वो I think those days are long gone where you could just go at 9 o'clock and clock out dot on 5 o'clock. Government is uh, I know might be difference of opinion, but सरकार काफी काम करती है and they're also trying to increase their accountability. No, Uh, absolutely, absolutely, especially yeah, at senior level. But I have a couple of exactly. my cousin, actually, my cousin, a couple of them are in government job, and sometimes they are more busier than me. So you're right. You're right. So there's one about failures. So how did you, if you've, and I'm not going to ask you that if you have seen failure or not. I'm sure everyone's seen one failure or the other on a bare minimum at this stage. Uh, so how did you manage that, and how did you rebuild yourself after that? Sure, absolutely. I think you're right. I think um, failure. I think I have changed this word to the learnings actually. Hmm. So failure, if you really think about it, right? You intend to do something in the way you expect the outcome should be like this, right? ये या वो आउटपुट होगा तो दैट मीन्स इट इज सक्सेस। आपने ये सोचा, आपने मेहनत करी, आपने प्रोजेक्ट बनाया, ये आउटकम होना चाहिए था, वो हो गया। अगर वो आउटकम नहीं हुआ, राइट, तो देयर इज सम लर्निंग फ्रॉम इट। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? ओहो, मैंने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया। अरे, मैंने सोचा क्यों नहीं? अच्छा, मुझे यहाँ पे 5 लोग चाहिए थे लेकिन 3 ही लोग थे यहाँ पे मेरे पास, वट एवर। देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग इन द प्रोसेस, राइट? सो आई encourage everyone, just change this vocabulary from failure to learning. And believe me, something will shift for you for sure. Right. So that's what I put it. Um, there's another one. What is the best thing to say as a mentor to your student that would inspire and start a new journey? So, if you were a mentor and if these were your students, so what would be how would you start that? So I'll just say 2 things. One, truly understand what you're good at. Focus on your strength. Identify your strength. Okay. And try to leverage your strength in your work. Believe me, अपने strength पे आप खेलोगे, you will always enjoy, thrive, and do well. Hmm. And second, I always say, which generally is my closing remark, but it has come up right now, but I'm happy to share that. Be gracefully bold. Hmm. Be gracefully bold. Gracefully bold means take calculated risk with grace. Okay? So push yourself to try something which you haven't done yet. Take some small risks which you haven't done yet. Right? And whenever I've done that, I am always pleasantly surprised. Right? So moving a career after 10 years is not easy in India, believe me. Okay, everyone Hmm. says सैलरी कम हो जाएगी, क्यों कर रहे हो, सब कुछ सही तो है, blah blah blah. And it Yeah. took me some time. It took me 2 years to have the switch. लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी स्ट्रेंथ है मेरी, और मैं रिस्क लेता रहूंगा थोड़े 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 थोड़े, एंड आई विल कीप पुशिंग माई सेल्फ. सो दैट्स द टू बिगेस्ट messages I always leave my mentees to take away with. Right, excellent. There's another question, which is in regards to distractions and social media. Hmm. So students are asking that how to sort of combat that, how to overcome that. I also have an answer, but I would love to hear your thoughts on managing social media and distractions. So I haven't fully cracked it yet, but some of the things which I have done, I only have LinkedIn account. Hmm. I don't have Facebook account. I don't have Instagram account. So I don't have the app on my mobile as well, as simple as that. Hmm. And so initially Facebook was taking a lot of my time. Yeah. Okay. एंड आई डोंट नो, एक दिन क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है, एक हफ्ते के लिए मैं फेसबुक बंद कर दूंगा ऑन माई मोबाइल ऐप,
लेट्स मी सी व्हाट विल हैपन। Hmm. और बस एक्सपेरिमेंट की तरह किया था बस एक बार, एंड मैंने कहा ठीक है यार, लाइफ इज स्टिल गुड एंड आई हैव मोर टाइम फॉर माई सेल्फ। तो उसके बाद से मैं सिर्फ अपने बर्थडे वाले दिन साल में एक दो बार जाता हूँ फेसबुक पे, मतलब जस्ट देखने के लिए कोई कह रहा है, कुछ सुन रहा है। उसके बाद मैं यूज़ नहीं कर, मतलब इट जस्ट स्टॉप समहाउ। सो मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, व्हाट इज द राइट आंसर, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक। बट Hmm. या आई मीन, इफ इट इज रियली डिस्ट्रैक्टिंग यू, try what may work for you, Hmm. and try something will work, something will not work. But yeah, that's what I have done, Lipit, on those lines. Yeah, I'm glad that worked. I think and this is what I have personally done, is that I delete the apps completely. And if not, then I switch off notifications for all Mm, social media apps. right, Because the thing is that something or the other will keep happening. right, Actually, in terms of distractions, what I would recommend to everyone that majorly works for me is that I only have important WhatsApp notifications on. right, And that's it. I don't right. need to know about what's happening on Instagram, on LinkedIn. I only use through my computer as well. Okay, And that's the other way. If you really want to be on the internet, don't make it so convenient for yourself. Try right. using it only through your laptop. You can use your social media, you can use Facebook, Instagram, everything through your laptop. So I think it's the easy access of it that usually adds to the I know, distraction, I know. right? Yeah, So this is the, I know, I know. Yes, sir. So people are very curious to I know you've just about started at Tata, but people are very curious to know about your because of course Tata is known for its culture and the way it takes care of its people, and I have first-hand experience. My parents were Tata employees at one point. So what has your experience been with the group so far? No, absolutely. I think in simple words, even I was not aware about the way Tata has inspired and shaped nation before joining Tata Group. Hmm. And in true sense, I was going through some of the stories of Tata Group. Yeah. Uh, in 1904, when the first Tata Steel plant idea was kind of kicking off, and imagine a situation when in 1947 we have been independent, but there are not enough food and not enough jobs and not enough industry to kind of take care of people prosperity. Mm, So to me, Tata played a critical role as building nation at mm, that time, which was really, really difficult to take. So my respect for Tata has multifold after I joined Tata Group. And mm, yes, they truly care about people. There are amazing policies. There are a lot of things which I'm also understanding as I'm getting more embedded in Tata Group. mm, It's truly, truly remarkable privilege, I would say, honor to be part of the Tata Group. And in a way, if you think about the whole structure, even mm, if Tata Group is making 1 rupee, mm, around 20 paisa is going for the welfare of nation in some shape and size. If you mm. really think about it, because it's owned by Tata Trust, this is, Yeah. so they invest in people development and space which is coming from Tata Group companies. Mm. So I think that is really, really powerful if you really think about it. It really is. And I think for those of you who are curious, I think there's a book that I had read. I haven't finished it, but it's called The Tata Group From Torch Bearers to Trailblazers. I think that's the name of the book. So that if you really want to know about how the group has played a very, very crucial part in building the nation today. And I think there's a quote in there by Jamshedji Tata, which says that a country that does not produce its own steel Yeah, will never ever be, will never ever become a true power. right. And that is how I think the origins of the plant in Jamshedpur. And again, I want to share something with the broader group here as well. So where, Anji, yeah. sorry. No worries. So where Mr. Goyal is currently speaking to us from is a place called Jamshedpur. So Jamshedpur is an entire city that has been built by the Tata Group in uh, surrounding
the steel plant and everything, and they and building an entire city Yeah. by a private organization. I don't think you'd hear examples of that. You'll hear microcosms of that, like Modi Nagar or something like that here and there. But what is happening at Jamshedpur is truly, truly remarkable. So, Truly remarkable. Yeah, you have to come here to see it. Absolutely, Divya. It is unbelievable the way they have done it. I mean, yeah, I don't have words to express it. Absolutely. I haven't been, but I hope one day. So yeah, here's to that. And I will take last couple of questions, Divya. I have to move yeah, in next 2-3 minutes. of course, yeah. So I think we've shared the Tata story as well. So let's take one more. Okay. Uh, okay, I'll take this last question. What's the best part about your life? Best part. Yeah. It's a good question. I think the way I think about it, I think there are three parts of my life which are important. And if they are in the good shape and size, my life is best. Mm, The first is my family. So taking care of my family, making sure I'm available when they need me, spending time with them. So that is the first part. Second is truly sharpening, excelling in what I'm doing in terms of my role, in terms of understanding leadership space, how leaders are built. To really, really, I aim to be the best, in those aspects, to build my capabilities as a leader in leadership development space. mm, And third, which I call is contributing back in some shape and size. There's always an element which excites me. It's not about sharing money. It's about, contributing back with knowledge. As you might have seen, because I keep going to colleges. I love sharing, supporting, mentoring in whatever way I can. So I think these are three parts of my life which are important. And if they are really working well, this is good. Apart from that, of course, as I mentioned, I love music. These days I'm learning flute, and which is mm. really exciting. I mean, so yeah, that is also something which is nice. So Okay, yeah. right. So I have last two questions, very Oh, quick okay. one. Okay. One is, could you please suggest a book that people should read? So your shortest and quickest answer for that. There are a lot of books which have shaped, I mean, me, but there's a if you really like there's a book called Thinking Fast and Thinking Slow. It's a thick book, but very, very deep about human motivation, human how human works. Hmm. And second is one of the books which inspired me is very, very famous, like You Can Win by Shiv Kheda. Hmm. There are a lot of stories which was there in the book which has really helped me in my initial years. So these are the two books. And lastly, I also want to let you know one of the most transformative program, Dipit, Toastmasters. I don't know if it is in the Shoolini Yes, University. we are trying to get that. It Yeah, is extraordinary program. I've heard. Yeah. It has really, really, really helped me. So Hmm. I suggest everyone to experience that in some shape and size. Yeah. Got it. Mr. Goyal, last question for you, and I'm going to flip the script on this one. Where does Paras Goyal see the next 10 years of his life going? So I'm very clear. Purpose of my life is to support leaders to unlock their potential. So next 10 years, I see myself working with more and more leaders, supporting them in unlocking their own potential. Because when they are unlocking their potential, there's a ripple effect with their teams, with the businesses, and world at large. So that's what I believe I do well, and that's my purpose, and that's what I continue doing. Thank you so much for joining us this morning. And again, thank you, students, for tuning in as well. This was one of my favorite sessions yet. And we look forward to having you again and hopefully sometime on campus also. Thank you so Thank you so much. much. Thank you. Pleasure. Have a nice day. Thank you, everyone. Have a good day. Thank you. Thank Bye. you. Bye. Bye. Bye.